Hi all, this is Ashish Kyal here and welcome again to Ashish Kyal Trading Gurukul. This is going to be a very short video, hardly for a few minutes. The reason I'm coming live right now is to talk about IRCTC stock, and because many of you have been asking me across Twitter and many other places and sending emails that what to do with IRCTC. तो एक मीम शेयर किया था मैंने कि कृपया चलती गाड़ी में मत चढ़िए, ये एक फॉरवर्ड था, मैंने नहीं बनाया। एंड आईआरसीटीसी के लिए बहुत ही सही मायने में था कि कृपया चलती गाड़ी में मत चढ़िए। तो जो भी लोगों ने आईआरसीटीसी के स्टॉक को काफी चलने के बाद खरीदा है, they are actually literally stuck in the stock because this stock has fallen nearly 30%, more than 30% from the highs in just 2 days of time, with some kind of pullback seen in today's session. So what to do with a stock which you are stuck with? So IRCTC को होल्ड करना है, बाय करे ये लेवल्स पे कि सेल करे, करना क्या है? चलिए देखते हैं ओवरऑल चार्ट पे, और टाइम क्या बता रहा है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि IRCTC का समय क्या चल रहा है, क्या वो समय सही है कि गलत है। तो चलते हैं investing.com पे, and you can see the chart here. This is IRCTC daily chart that you are seeing here, and what I said is from the highs of here, which is 6412, you saw a very sharp correction. This is a 30% correction from the top that you can see it on the chart. This is a daily chart. अभी मैं इसको लॉग स्केल करने वाला हूं। यहाँ पे एक लॉग है, ये लॉग स्केल क्यों किया मैंने? जब भी इतना स्टीप मूव आता है, if you do a log scale, you will be able to see the trend much more correctly. So overall, what is happening with this stock is what we are trying to understand. After a sharp rise, many people who entered around 5,800, 5,500, 6,000 levels are wondering कि ऐसा क्या चेंज हो गया 2 दिन के अंदर कि स्टॉक में इतनी गिरावट आ गई। लेकिन सोचने की बात यह है कि रैली जो हाई थी, लेट मी गो टू अरिथमेटिक अगेन, on the stock came from 1600 levels towards that 6400. The stock rallied from 1600 towards that 6400 levels on the upside, and then don't you expect कि यार normal 50% या 61.8% या 38.2% retracement होगा? These are Fibonacci retracements I am talking about. Now what is the Fibonacci retracement level? Let's just plot it and check from this leg onwards. तो यहां से अगर हम शुरू करते या लोएस्ट पॉइंट से ले लेते, इफ आई टेक इट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट जहां से पूरा रैली शुरू हुआ था, वहां से पूरे राइज का अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, तो जहां पर आके ये स्टॉक रुका है, दैट इज एग्जैक्टली 38.2%। कैन यू सी दैट हियर? 38.2% के इधर आके ये स्टॉक हॉल्ट हुआ है फिलहाल के लिए। लेकिन दिस इज जस्ट अ टेम्पररी pause, I would say. We are yet to see a close above the previous candle high. So इसका मतलब क्या है? यहां पर जब तक आज के हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिलेगा, we will avoid buying this stock. अगर आपको फ्रेश बाय करना है, avoid it. Averaging I would suggest not to do, because हो सकता है इस स्टॉक में एक मीनिंगफुल टॉप बन चुका है। यहां से जो पुल बैक आएगा शायद वो खाली रिट्रेसमेंट होगा। देखिए पुल बैक शार्प भी हो सकता है, यू कैन गेट 10%, 15%, यू डोंट नो फ्रॉम दिस लेवल्स। लेकिन 30% करेक्शन के बाद में अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो इसे 50% रैली करना पड़ेगा टू गेट टू योर प्राइस। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इट टू क्लोज अबाउट टुडेज हाई। तो आज का हाई था 4745, अगर 4745 के ऊपर जाएगा, देन वी कैन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी of some consolidation or pullback or rally can happen. लेकिन अगर ये 38.2% का आंकड़ा ब्रेक हो गया, 38.2% retracement which we saw, if that breaks down and stock closes below the low of 4377, then 50% पे डायरेक्टली सपोर्ट है, which is 3877. तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है आपके पोजीशंस के लिए, आप लॉन्ग है, तो ये स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, विच इज द लो ऑफ यस्टरडेज कैंडल जो 4377 है। तो 2 लेवल्स हमें मिले, 4377 के नीचे एग्जिट करना है, और अगर बाय करना है तो शायद 4745 के ऊपर पुल बैक के लिए बाय करना है। इट्स नॉट अ न्यू ट्रेंड, इट्स अ पुल बैक। नाउ लेट मी आल्सो अप्लाई अ साइकिल फॉर यू।
so that इससे पता चलेगा कि IRCTC का समय कैसा चल रहा है. So I'm picking up a low here. ये low point से मैं एक cycle apply करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, and यहाँ से I am going to apply a cycle which is approximately of a 28 days. क्योंकि 28 day cycle क्यों apply करना है, वो सब डिटेल्स हम मास्टर ऑफ साइकिल्स में कर चुके हैं. तो एंड ऑल्सो मेंटरशिप में हमने डिस्कस किया कि हार्मोनियससिटी होता है एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. तो यहाँ से अगर मेरे को 28 डेज का साइकिल अप्लाई करना है तो आई एम गोइंग टू टेक यहाँ पर 219 का लेवल एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई अ साइकिल व्हिच इज ऑफ 28 डेज एंड आई एम गोइंग टू सी इज दिस साइकिल वर्किंग वेल. तो ये आपको दिखा है साइकिल. Okay, so if you are able to see this cycle, you might be able to make out that the overall cycle is working well. यहाँ पर लो बना, चलिए let me mark it for you. यहाँ पर एक लो बना साइकिल का. ओके, कहाँ गया? यहाँ पर, यहाँ से रैली, यहाँ से रैली, यहाँ से रैली. From here brilliant rally, from here brilliant rally. Now this is amazing, which means IRCTC Indian Railway 28 दिन का साइकिल फॉलो कर रहा है. 28 दिन is also a lunar cycle for the way people have been talking about the Purnima yesterday and will the market form a low. There are a lot of questions that are coming up, whether the full moon is going to work again or it's not going to work again. Tomorrow is the day. And अगर आप मेरे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, what a move Nifty has been giving, every single move, every single day I have been tweeting across @Kyal Ashish पे. अगर आप फॉलो कर रहे हैं एंड टेलीग्राम चैनल AK ट्रेडिंग गुरुकुल पे, हर एक मूव हम कैप्चर कर पा रहे हैं यूजिंग समटाइम्स नोन एज साइकिल्स. तो चलिए यहाँ पे IRCTC का समय कैसा चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई लुक एट दिस ओवरऑल साइकिल ऑन दिस, ऐसा लग रहा है कि ये फिलहाल मिडल ऑफ द साइकिल के पास में आ रहा है. ओके, नाउ मिडल ऑफ द साइकिल अगर मुझे प्लॉट करना है और समझना है तो मैं एक साइकिल लाइन बना दूंगा. यहाँ पर सिंपल है, मैं खाली एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. ठीक है, ये मिडल है, साइकिल का मिड यहां पर है और इसके बाद में साइकिल सेल जोन में जाता है. इसका मतलब है यहां से गुंजाइश है या पॉसिबिलिटी है, अगर पुल बैक आया दैट्स गोइंग टू बी अ टेम्पररी पुल बैक and then maybe along with the cycle the stock can again go down if a pullback comes. If this low gets broken, then this stock can then continue to ride on the downside. So that is how the cycles are suggesting for IRCTC. तो कल का दिन जो है ट्रेडिंग सेशन which is of 22nd October is going to be an important trading session. Keep a track on the levels I talked about and trade accordingly. Do not average the stock. If you have it, if you want to buy it, keep a watch on the levels I have told, but only for a retracement. You can get stuck easily in this stock. This leg is taken out faster, so I am seeing that an important top might have been formed in IRCTC. So you have to be careful with that. Hope this information helps you how I combine simple Fibonacci with time cycle, and this gives you, and along with candlestick of course, this gives you a very clear way of looking at the overall chart. Before I wind up, I want to tell you one more thing just very quickly कि Saturday को I am conducting a free webinar on Saturday at 11 AM which is talking about candlestick and time cycle. Are you a part of that? You will going to be amazed. 2 घंटे का webinar है. You will be amazed to see how brilliantly this technique जो मैंने अभी just बताया उसको कैसे बनाना है डिटेल में in 2 hours. I am going to teach it to you. So be soon and register at wavesstrategy.com/webinar, and you can also contact us on 9920422202 because ये webinar we go houseful, so ensure you are there on time because you might not be able to enter later on, and this is out of special request that we have launched this one. So ensure that you are there on time. Now on Saturday for 2 hours of free webinar, I am going to talk about candlestick and time cycle. And these techniques are going to be discussed there. Before I just go and sign off, I would like to share a quick disclaimer with you. We are SEBI registered research analysts. You can see the registration number here. This is purely for educational. I am talking right now. We do not have any, this is the disclaimer. So just ensure you see this. This is Ashish Kyal signing off and see you again. Keep liking the channel, sharing it across and subscribe to the channel so you keep getting such kind of alerts when I go live on stocks
and many other stocks that I'm going to talk about on a Saturday at 11 a.m. Be a part of that. Again, visit wavestrategy.com/webinar. Thank you.